So CPC you enjoyed? All right. Now this is absolutely diametrically opposite procedure of criminal procedure. We've seen civil procedure and now criminal procedure. Civil proceedings के जितने substantive laws हैं उन पर CPC का procedure लगता है, whereas all the criminal statutes, not limited to IPC, all the criminal, because IPC generally is a substantive law which covers all the offenses. But IPC was prepared in 1860. I'm sorry. But since 1860, there has been multiple statutes on crime which were drafted. Even post-independence, the Parliament has created a lot of criminal statutes. तो चाहे IPC हो या और कोई criminal statutes, pre-independence, post-independence जो भी बने, उस पर सब पर प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ही अप्लाई होता है. So this is the first fundamental thing which you must remember, that if you are appearing before a criminal court, then the procedure would be CRPC. And CRPC 1973, जिसमें वक्त वक्त पर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं. 2012 में मेजर ओवरहॉलिंग हुई, उसके बाद अभी 2018 में भी काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए. तो CRPC अनलाइक CPC में हमने देखा था एक पोर्शन सेक्शंस का था, दूसरा पोर्शन ऑर्डर्स का था. CRPC does not have that subdivision. It is basically divided into 484 sections. Original CRPC of 1973 has 484 sections, which if you count today are much more, because with amendments a lot of more sections have been added, more chapters have been added. Although the original count, there are 37 chapters into CRPC and 484 sections. अब आप समझिए कि जैसे CPC को हमने कहा कि CPC को पढ़ने का तरीका कोई फिक्शनल नॉवेल की तरह नहीं है कि आपने फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया और एंड तक चले गए. देयर इज अ मेथड टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर. सिमिलरली CRPC को समझने के लिए भी एक मेथड है. अब ये समझिए कि बेसिकली CRPC दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बीच में डील होता है. दो लोग कौन हैं? Now the entire CRPC operates between these two authorities. पुलिस एंड क्रिमिनल कोर्ट्स. ठीक है, हम ये देखेंगे कि पुलिस की जो पावर्स हैं वो भी दो हिस्से में डिवाइडेड है.
और CRPC डील्स विद बोथ दीज टू एरियाज. पहली है प्रिवेंशन. प्रिवेंशन ऑफ क्राइम मतलब क्राइम होने से पहले पुलिस का रोल. So certain chapters of CRPC are dedicated to this aspect of police. Preventive proceedings. उसके बाद जब क्राइम हो गया तो पोस्ट क्राइम प्रोसीडिंग्स. पोस्ट क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है. इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होती है, अरेस्ट होता है. हाँ, अभी देखिए ये दोनों ही सिचुएशंस में, प्रिवेंशन में भी और पोस्ट क्राइम में भी अरेस्ट होता है. Arrest by police is pre-crime stage also and post-crime stage also. We'll see everything gradually. और दूसरा एस्पेक्ट CRPC जो डील करता है वो कोर्ट्स के साथ डील करता है. और कोर्ट्स में ट्रायल होता है. कोर्ट्स में क्राइम का ट्रायल होता है. तो कई बार मैटर कोर्ट जब पहुंचता है तो बिना पुलिस के भी पहुंच जाता है. यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट बाय लॉजिंग अ कंप्लेंट डायरेक्टली बिफोर द कोर्ट. CRPC कोर्ट्स कितने तरह के हैं जो क्राइम से डील करते हैं वो भी डिफाइन करता है. वील सी दैट ऑल्सो. बट ट्रायल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ट्रायल विच हैपन इन क्रिमिनल कोर्ट्स. 4 तरह के अलग अलग कोर्ट्स हैं जहां 4 तरह के ट्रायल होते हैं. 4 अलग अलग तरह के ट्रायल्स जो कि CRPC में डिफाइंड है. फर्स्ट इज सेशंस ट्रायल. सेशंस ट्रायल सेशंस कोर्ट में होता है, विच इज अ हायर कोर्ट देन द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट. इन दोनों का डिस्टिंक्शन मालूम है आपको? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. Any idea? See, in metropolitan region, the magistrate is called metropolitan magistrate. But in non-metropolitan regions, the magistrate is called judicial magistrate. So, if you go to Nasik, which is a non-metropolitan area, the magistrate will be called judicial magistrate. But in Bombay, if you go to criminal court, it will be called metropolitan magistrate. Right? And because in non-metropolitan areas, judicial magistrates used to have those categories of first class, second class, etc. So, in a short form, in non-metropolitan area, the judicial magistrate first class is called JMFC. It's a very colloquial term when if you as a lawyer will visit some non-metropolitan area, people you would find will be talking in the terms of I'm going to appear before JMFC. So please understand, JMFC stands for Judicial Magistrate First Class. Is that correct? Second is, now rest of the three
trials happen before magistrate court, either Metropolitan Magistrate or JMFC. So first this happens in the Sessions Court. And these rest of the 3 trials happen before either Metropolitan Magistrate or JMFC. Either before the Court of Metropolitan Magistrate or before the Court of Judicial Magistrate, first class. Now what are these 3 trials? These 3 trials are warrant trial, summons trial, and summary trial. Three different categories of trial happening before the Court of Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate, first class. So we'll understand all these trials. ठीक है? ये classification आपको समझ में आया? As I said, the whole CRPC is divided into 37 chapters. The first chapter is that of preliminary, section 1 to 5. Deals with a preliminary introduction of CRPC, which also under section 2 gives definitions. Now, thereafter, chapter 2 talks about the constitution of criminal courts. Chapter 2 deals with constitution of courts. As I explained recently, there are magistrate court and sessions court. All this classification you will find in chapter 2, where which courts deal with which matter is classified. Constitution of courts. Chapter 3 deals with the powers of the court. So which court has what power? Now, as I said, CRPC deals with courts and police. Chapter 3 talks about the powers of superior police officers as well as aid to police and magistrate. Now, this is very interesting. Aid to police and magistrate. Aid means help, support. CRPC says that, or expects even general public, citizens, to support police and the courts of magistrate or even executive magistrate. So in case, interesting provisions you will find in CRPC that in case the police is trying to capture a criminal, it is expected from general public to give a helping hand to police. Or if a crime is witnessed by a citizen, he should inform it to the police. There are certain provisions which are very interesting, where an ordinary citizen can also arrest a person. So it is not limited, this power of arrest is not limited to police. You can also capture a person and hand over to the police.